Okay, good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, yes, sir. Yeah, good morning. Thank you. Okay, so can you see my screen? Yes, sir. What is the last topic we have covered? I guess. Okay. I think we have covered interface, right? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Okay, we have covered interface. Okay. Now we are going to see the topic exception handling. Okay. Okay. We are going to see the topic as a exception handling. Okay. Again, it is one of the last topic from the Java. Okay. Okay. What is the exception? Do you know what is the exception in the programming or in coding? क्या होता है exception मतलब? Uh, so when we execute a program and it declares or it gives an error regarding the some syntax, so that's called exception. Okay. Okay. Good. Abnormally, Again, the execution of program is stopped is called exception. very good. Again, good. Again, any guesses? What is exception in terms of programming or coding? Okay. Okay. We will discuss it. No issue. Okay. Okay. You have already installed Eclipse, right? All of you. Is anyone is pending to install Eclipse? Yes or no, guys? Yes, sir. No, All have sir. installed. All have installed Eclipse, right? I guess. Okay. What is the use of Eclipse? To write and execute code. Okay, very good. We are going to write the code, right? We are going to write the code as well as we are going to execute the code. Before that, Eclipse, how these two processes were done? Using Notepad. That is for writing, and for execution, Command prompt. command prompt. Okay. But if we are using Eclipse, then both of these activities are done by the Eclipse only. बराबर ये दोनों एक्टिविटी क्या हो रहे हैं अभी Eclipse से हो रहे हैं. That is very easy. Okay. Okay. Now, while writing the code, okay, while writing the code, we can get an error, right? We can get an error, definitely. Okay. Have you observed this type of error while we are writing the code? Yes, sir. Did you get any error? Yes, sir. Okay. That error is called as a Syntax error. syntax error. Okay. That error is called as a syntax error. Okay. Now, if you got that error, syntax error, then what you will do exactly? So we resolve the error. You will resolve the error, right? आपको स्क्रीन पे ही पता चलेगा if you'll hover over the mouse on that particular line, okay, or that particular code, it will show you some error message, okay. It will show you some error message, and this error message is already shown by whom? Eclipse only, right? Eclipse is showing that. So that error is nothing but like syntax error, and that syntax error is handled by Eclipse only. Okay. By mistakenly, if you're not going to put any sentence, like if you're not going to end any sentence by using this symbol, it will show you the error in that particular line that we have to insert this symbol to complete the that
line. Okay, so that means while writing the code, you may get some error. That error is called as a syntax error, and that syntax error is handled by Eclipse only. We don't need to take care of this, right? Because while writing, if you are getting any error, definitely Eclipse is going to notify you, and accordingly you can take some actions, right? Okay, so these syntax error like are taken care by Eclipse only. Okay, okay. So consider now you are going to execute the code by using Eclipse, right? Where we have written the code and now we are going to execute the particular program. That time also there is a possibility that we can get an error. That time also there is a possibility we can get an error. This is which type of error? इसको कौन सा error कहते हैं हम? Runtime error. Okay. Now see, these two are different errors. One is syntax error. While writing the code itself, you are getting some error, right? Which is shown by the Eclipse only on that particular line or on the screen. But you compile the code and trying to execute. That time also you can get an error. आपको तभी भी कोई error आ सकता है. Okay? उस error को हम क्या कहते हैं? Run time error. Run time error. And that error will be not handled by Eclipse. That error will be not handled by Eclipse. For that we have to use exception handling. For that we should use the exceptions handling. Are you getting the concept? Where exactly the exception handling is going to apply? Yes, sir. देखिए, Eclipse का use है to write any code at the same time we can execute the code. While writing the code, आपको कभी कभी error आ सकता है ना? You may get an error. Okay? That error is nothing but the syntax error. Whatever error we are encountering, it is in the syntax of your code, right? As per this syntax rule, we are not going to do the proper thing. तब आपको कुछ error मिलेगा. That is what syntax error. That is handled by Eclipse, right? That is handled by the Eclipse. But the same time, the second operation is what? The execution. जब execution के time आपको कुछ error आता है, right? So that error is called as the runtime error. That error is called as a runtime error, and that will be handled as exception handling. That will be handled by exception handling. यहाँ तक किसी को कोई doubt है? I guess no, right? No. So when I ask you, if you are getting the error, you have to check which type of error is. Okay? अगर वो syntax error है तो वो Eclipse से ही handle हो जाएगी. No need to use the concept of exception handling. But if you are getting the runtime error, that time we have to use the exception handling. Now, what is the example of runtime error? कुछ गेस कर सकते हो आप? रन टाइम एरर मतलब क्या होगा फिर एग्जैक्टली? रन टाइम एरर मतलब क्या होना चाहिए? सर अगर हम लोग जैसे कि 0 से कोई नंबर को डिवाइड करते तो शायद वो एक रन टाइम एरर होगा. ओके. ओके. अगेन. और कोई एरर which we can see it as a runtime error. Class not found error. Okay. Okay. Understand some simple errors. Okay. There are number of errors, but understand some simple errors. Like user gave invalid data. User gave invalid data or invalid arithmetic operation
राइट? और फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल पर ऑपरेशन करना चाहते हो और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है ना? सो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? और एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट अ कनेक्शन, फॉर एग्जांपल जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, है ना, that time we need to create a connection with the database, okay, through code only. So like bad network, okay, in that case if you are not going to make a proper connection, so these are the runtime connection. While coding we cannot get these, while coding we cannot get these type of errors, okay. So how exactly the exception handling is done, okay, how exactly the exception handling is done, that we have to see, okay. It's very very simple. Now in Java again there are many keywords. What is keywords? What is the meaning of keyword? language defined words. It is a language defined words, or it has a predefined meaning. उसका मीनिंग पहले डिसाइड है, यू कैन नॉट डिसाइड इट, राइट? वी हैव टू यूज वन कीवर्ड ट्राई, ओके. We have to use one keyword try, okay. We have to give the body, for example in curly braces we have to give the body. So exactly body, in body what we have to specify, whatever the statements, okay, whatever the statements which may get a runtime error. अगर ऐसा आपको लगता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए जो भी है, दिस इज व्हाट द रिस्की कोड. रिस्की कोड मीन्स इसमें मुझे एक पॉसिबिलिटी है कि रन टाइम एरर मिल सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स एरर नाउ, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द रन टाइम एरर. If you are guessing in this piece of code, whatever it may be, number 1 line, 2 line, 4 line, whatever it may be, if you think it is a risky code, I may get an exception or runtime error, so you have to put that piece of code in the try block. It is called as a try block. वो start होगा इस opening curly braces से यहाँ तक closing curly braces तक रहेगा, okay. So no rule, you have to give whatever the risky code you think कि यहाँ पे exception आ सकता है, okay. Now try block will never work alone. बस हम try block के साथ काम नहीं करते, okay. अब try block का पहले function समझ लीजिए. What is the function of try block? It will try to identify the error. There is an error, okay, it is not a syntax error, okay, I am not talking about the syntax error now. syntax error है तो वो आपको Eclipse में दिखा जाएगा वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन में, और यू कैन मेक इट करेक्ट, ओके. आई एम सेइंग द रन टाइम एरर, आई एम सेइंग द रन टाइम एरर. सो अब वो एरर तो मुझे पता भी नहीं है, बट जस्ट व्हाट आई थॉट कि उस पीस ऑफ कोड में वो एरर हो सकता है. नाउ एज अ यूजर वी डोंट नीड टू आइडेंटिफाई दैट एरर, okay. This try block will take care of this. Try block क्या करेगा? What is the function of try block? It will try to identify the error. It will try to identify the error, okay. Try block will do the task to identify the error in given code. जो भी आपने select किया है, select मतलब you have given the block try block, और उसमें जो भी statement या जो भी piece of code आपने रखा है वहां पे जो भी रन टाइम एरर आने वाला है वो उसको क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा. इट विल जस्ट आइडेंटिफाई द एरर, ओके. इट विल जस्ट आइडेंटिफाई द एरर. नेक्स्ट कीवर्ड वी हैव टू यूज, नेक्स्ट कीवर्ड कैच. वी हैव टू यूज द कैच, ओके, कैच. एंड ऑल्सो इट विल हैव द बॉडी. उसको भी क्या होगी? इट विल हैव द बॉडी. अगेन कैच इज अगेन वन मोर कीवर्ड इन जावा, okay. Now what the catch keyword catch block will do, देखिए try अगर आप block यूज कर रहे हो तो उसके साथ compulsory catch block यूज करना ही है, okay. Make sure if you will just use the try block it will throw an error only, okay. It will throw an syntax error only, not the runtime. But you have to use the try
and also the followed by the catch block. Okay. Now what the catch block will do? It will just print, sorry, it it will just print the error. It will just print the error. Which type of error is this? Now how this catch block will come to know which type of error is this? देखिए, ट्राई ब्लॉक ने उसका काम कर लिया क्या? It just identified the error, runtime error, and now we want to see that error in our console, है ना? उसको print करना है. So that work is done by the catch block. That work is done by the catch block. Okay. Now for that we have to use one super class. What is the definition of super class? We have seen super class. What is super class? Have you ever discussed what is super class? No, sir. No? Okay. Have you seen the inheritance? Yes, sir. Okay. So I told you, if this is a class whose method are accessed in another class, class A, then what is the name of this class A? It is called as a child class, or this class is called as a parent class. ये तो पता है आप सभी को. Yes, sir. इसी को मैंने आपको अल्टरनेट नेम बताया था. The parent class is also known as super class, and the child class is also known as, इसको क्या कहते हैं हम? सब क्लास. ओके. सो पेरेंट क्लास का अल्टरनेट नेम है सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास का अल्टरनेट नेम है सब क्लास. ओके. सो डोंट get confused with the name also. Okay, there will be the multiple names but the meaning will be same. Okay, again we have same seen the concept for overloading. What are the different names for overload, this concept? Compile time polymorphism. Again method overloading or simply overloading. Okay, so see the names are overload, overloading, method overloading, compile time polymorphism. Okay, simple again for override, override, overriding, method overriding, and runtime polymorphism. Okay, so these are the names, okay, which we have to keep in mind. So if I am saying this exception is the super class, super class means what exactly meaning, what I am trying to say? सुपर क्लास मीन्स इस एक्सेप्शन क्लास में, या इट्स अ पेरेंट क्लास. इन दिस एक्सेप्शन क्लास all type of error type and respective error message is put. Okay, इस एक्सेप्शन में क्या है, जितने भी एरर के टाइप है, अब मुझे पता नहीं एरर का टाइप कौन सा है. इस ट्राई ब्लॉक में किस टाइप का एरर आइडेंटिफाई किया गया मुझे नहीं पता. इट मे बी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वॉट एवर इट मे बी. एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप क्या है, वो एरर क्या है. टाइप 1 error this, type 2 error this, like that. So this exception class contain, this super class contain like all type of error and their message also, their error message also. Okay, now we have to give any error name like E or anything you can give. Okay, here I am simply giving E, catch in bracket exception as a super class, and the error name consider E I am giving. Okay, now if I am just try to print that error, so in console I will get what type of error we found in this try block. What type of error we found in this try block.
Okay, again I will repeat. We are trying to find the runtime errors that will be handled as a exception handling. Okay, to use the exception handling concept, we have to use the try block. Okay, we have to use the try block. What is a try block? In try block we have to put the code which is risky, or we may think there may be the runtime error. ऐसा मुझे लग रहा है, so I will put that code in this try block. Okay, statements means हमारा जो भी code होगा. Okay, now there is rule like if we are using the try block, next to it we have to use the catch block. Okay, because the task for the try block is it will just try to identify the type of error, whereas the catch block will try to print that error. एरर क्या है वो मुझे देखनी है ना. सिंपल जो भी एरर आपको कंसोल में आएगी, यू कैन जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इन गूगल एंड यू कैन सी द डिटेल डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट कि एग्जैक्टली वो एरर क्या है और किस तरीके से आया है, इफ यू वांट टू फाइंड दैट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो, सर राइट. कैच ब्लॉक एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार. कैच ब्लॉक. ओके, देखिए कैच ब्लॉक का काम क्या है, वी हैव टू प्रिंट दैट एरर. ओके, अब अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो मुझे एरर भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ऐसा होता है ना, विच टाइप ऑफ एरर. अब ये सब एरर कहां पर प्रेजेंट है? सो इन एक्सेप्शन सुपर क्लास. एक्सेप्शन एक सुपर क्लास है, वहां पे सभी एरर प्रेजेंट है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. एरर वन टाइप जो भी है, टाइप ऑफ एरर उसका डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अनदर एरर, ऐसे नंबर ऑफ एरर्स होंगे. अब इस ट्राई ब्लॉक में एक एरर हो सकता है, मल्टीपल एरर हो सकते हैं, अगेन इट डिपेंड्स. सो इट विल ट्राई टू फाइंड दैट एरर्स, एंड इफ वी वांट टू प्रिंट दोज एरर्स वी आर यूजिंग द कैच ब्लॉक. सो ट्राई ब्लॉक का सिंपल फंक्शन क्या है, इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरर and catch block is going to print that error, because here we are giving the instruction as a system.out.println and we are giving the argument as the exception itself, है ना. उसका नाम जो भी है मैंने यहाँ पे e दिया है, you can give a b c whatever it may be. Okay, it will try to print the error on your console. कंसोल में आपको जो नाम दिखता है, simply you can copy it, paste in the Google and see the detailed description if you want. Otherwise it is also easy to understand. But as वहाँ पर number of errors ज़्यादा है, so we cannot cover like all types of error which are handled. Okay, so जो कुछ basic error है that I can show you and you can just see on the console. कंसोल में भी आपको अगर डाउट है तो you can just simply copy it and paste it. Okay, generally there is no major dealing to handle these. Okay, डाउट क्लियर हुआ है कैच ब्लॉक का? यस सर. Okay, now we are going to see in terms of code. Okay, now this is the project, this is the package, list of packages. I want to create a new package. How to create new package? Just go right click on this, create a new package. Okay, package I'm trying to create as a exception handling. Okay, here the package is created, right? I'm just creating a class to write the code. I have created a one Java class. Okay, its concept is very simple, just try to understand the things. Okay, directly I will try with the main method. What is syntax for main method? Public static void main string args arrays. Okay, we have created the main method. I have created one class except handle one. In that I have created one main method. Okay, now see the carefully. I am going to define one variable int a is equal to 10. Now, is there any error you can see on screen?
Yes, sir. Semicolon. semicolon. Okay, we are going to see that. Okay, it's showing like insert that particular symbol to complete the statement or to block the statement. Okay, now see this type of error is what the syntax error. यहाँ पे नाम भी देखिए, if you'll house over the mouse, like hover over the mouse on that symbol, that cross mark, it will show you syntax error, comma, again also it will give you the solution, like you need to insert that symbol semicolon to complete the or to block that statement, right? This is the syntax error. इसके लिए मुझे कोई ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, right? Directly eclipse is going to tell you what is the error, syntax error, and how you can nullify it. Okay, I'm going to put that symbol. Okay, now there is no error. Are you getting any error? No. No. Okay, now I want to print that number a. Okay, now if I will run this code, what is the output? 10. Simple, I have given just one instruction to print the number a, which I have stored the value as a 10, so 10 print hoga. Okay, now for example we are making it as 10 divided by 0. I'm making it as a 10 divided by 0. I'm getting any syntax error? No. Okay, but arithmetically or mathematically, what is the meaning of 10 divided by 0? Anybody knows? Infinity. Infinite. Okay, can we try to run this? Can we try? What the output I should get? मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? Is there any error with code? Exception will come. Exception will come. Okay, we are getting some message, right? Exception in a thread main and that something. Okay, now if this is simple error, we are getting some 2 lines. If that error is like complicated, we are getting number of line, the detailed description of that error in this console. Okay, so we have to handle these exceptions. मतलब ये मुझे exception क्या करना है, handle करना है through code. So for that reason what I will do, I will put this code. देखो यहाँ पे exceptions कहाँ आ रहा है, mainly in line number 6. Okay, so I will use the code, I will use the keyword try. If I'm saying try, it will be in the block. Okay, इट इज इन ट्राई ब्लॉक. देखिए अभी ट्राई ब्लॉक में मैंने जो भी मेरा कोड रिस्की कोड लगा है मुझे, या जहाँ पे एक्सेप्शन आता है वो मैंने कोड रखा है. ओके ओके, still I'm getting an error. Why? Because we have not used the catch block. Okay, I have not used the catch block. ये ट्राई ब्लॉक है, जिसमें क्या करूंगा बस मैं, I will try to identify the error. This is your try. Okay, now we have to use the catch block as well. So what is the syntax? Catch, inside the bracket we have to use which class? Exception. Example, I'm giving the name as error e. Inside the catch block I'm just going to type the error. Which type of error? Just simply e, which I have already given the name. Okay, now are you getting any error in this code now? Any syntax error you are getting? No, No, right? sir. Okay, example, if you will remove this symbol, definitely you will get the syntax error. Again syntax error, right? Or simply if you will remove any one curly braces also, you will get an error. Okay, so these are what? The syntax error. These are not the runtime error. है ना, जब मैं कोड लिख रहा था तभी जो एरर मुझे दिख रहा है, that is nothing but the syntax error. Okay, now I will try to run this.
So it will give you the name of that error. Okay, java dot lang dot arithmetic exception and some message divided by 0 divided by 0. Got it? It's very simple. देखिए try में क्या हुआ है, the risky code which we think it may have some runtime error उसको मैंने put कर दिया, and in cache block I'm just trying to print the error. I'm just trying to print the error. Now if you want more information you can just go, जैसे किसी को पता नहीं कि arithmetic exception क्या हो सकता है. Arithmetic is related with the operations, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, इसमें अगर कुछ एरर आप करते हो तो वी आर गेटिंग इन दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एरर एज वेल. अभी सब प्री डिफाइंड है. ओके ये क्यू कैसे आ रहा है, डोंट गेट वरीड. जो सुपर क्लास एक्सेप्शन है उसमें सभी ये टाइप क्या है, प्री डिफाइंड है. ऑल दीज आर लाइक प्री डिफाइंड. इसमें किसी को कोई डाउट है? Any doubt? Yes. Okay. Again we will try one more. Okay. देखिए, I'm just removing this. I'm just removing this. You know arrays, right? What is arrays? Array क्या होता है? Collection of similar data type. Collection of similar data type. How to define array? Array को कैसे define करते हैं? डेटा टाइप ऑफ द एरे इंट. मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ. डेटा टाइप ऑफ एरे इंट, नेम ऑफ द एरे एंड द सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल is equal to in curly braces I can give the values, of that element 10, 20, मान लीजिए 30, 40, 50 and 5 value I am giving, closing the syntax, okay, or closing that particular line. Now here I have defined the array name is A, its data type is int, and there are 5 elements. Okay, now if I want to print the value of 30, what I should give in this print instruction? 2. Just 2. Just 2, or how we are going to define the index? We have to use for each loop now. For each loop, okay. No, I just wanted to define one value out of the array. I showed you even how you can print the one value. I'm not interested to print all the values. Square bracket में क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट में? A square bracket में 2. index define करना. Index, okay. What is the index of this 30? 2. 2. Why? Because index will start with a 0, है ना? 0 कहाँ है? 10 के लिए 0 है, 20 के लिए 1 है, and going on. So I want to print the value of 30 as a then index using as a 2. Code compile finds. Now if I will run this, what the value should I should get in output? 30. 30. And what about this catch block? It is also having some statement, right? Print statement. Okay, we'll try. Don't get worried. Okay, I'm trying to run this. I'm getting just 30. What about this catch block? But there is no exception. That's why Very good. catch block. See, we have to use and try and catch block together. We have to use try and catch block together. That is the first tool. If there is no any error, runtime error in the given try block, then catch block will not be executed. ये execute ही नहीं होगा.
it will be not get executed if there is no any error or exception in this try block. यहाँ पे देखिए कोई exception नहीं है, that's why you are not getting any error message or execution of the catch block, because ये यहाँ पे कोई error है ही नहीं आपकी in this try block. Okay, I will use one number as a 12. Still code compile fine, यहाँ पे कोई syntax error नहीं है. Do we have the element in this array with index as a 12? Yes or no? No. No, right? We have just 5 elements up to index 4 simply. Okay, now I will try to run this. You are getting the error java.lang.arrays index out of bound exception, और उसका मैसेज है index 12 out of bound for length 5. length 5 means element are 5, index होगा up to 4, and ये जो 12 अपने जो index दिया है ये out of bound है, जो क्या है नहीं है यहाँ पे, है ना. तो जब आपको ये एरर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप इसको गूगल कर सकते हो. ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग, अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो ये वन बाय वन प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएंगे कि कौन से एरर है और उसका डिटेल क्या है, मीनिंग एग्जैक्टली. गॉट इट? इज इट ओके? Okay, so keep like mention one point like try और catch block हमेशा साथ होते हैं. Okay, try and catch blocks are always together. बस आप try use कर सकते हो और catch नहीं, you will again get an error. So to use the exception handling, you have to use the try and catch block together only, where try block will try to find the type of error, it will just identify the error, and catch block will print that error. Catch block will print that error. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No doubt, right? Okay. So there is again one more way to deal with this exception handling that I will tell you directly in the Selenium only. Okay, that is throws exception. Okay, as of now you just try to understand the try and catch block. Again, in interview or in some question you can get asked like try, catch, and one more block is there, that is finally, right? So फाइनली का मीनिंग ही वही है कि आपके पास एक्सेप्शन हो या ना हो, इट इज गोइंग टू प्रिंट और नॉट गोइंग टू प्रिंट, वॉट एवर इट मे बी, ट्राई और कैच का ऑपरेशन हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक में आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा. ओके, जैसे यहाँ का सीक्वेंस क्या है, ट्राई ब्लॉक में अगर आपको एरर है तो ही कैच ब्लॉक का एग्जीक्यूशन हो रहा था, बट इसके बाद ऐसे ही फाइनली ब्लॉक अगर आप पुट करते हो तो इट इज बाय डिफॉल्ट गेट एग्जीक्यूटेड, है ना. वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, उसका सिंपल मीनिंग देखिए. हम फाइनली ब्लॉक कब यूज करते हैं, लाइक वी आर नॉट वरीड अबाउट द ट्राई एंड कैच ब्लॉक, बट वी वांट सम एक्शन टू बी हैपन. मान लीजिए कि आपने कुछ टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई ब्लॉक यूज किया है, कैच ब्लॉक यूज किया है. अब ये सब होने के बाद आपको लॉग आउट तो करना पड़ेगा, और सिंपली यू वांट टू क्लोज द ब्राउजर व्हिच इज अ बाय डिफॉल्ट कंडीशन, है ना. एरर आता है इसलिए आप ब्राउजर ओपन नहीं रखोगे, है ना, लॉग आउट नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा. यू विल लॉग आउट इन एनी केस, एरर आए या ना आए. सो इन फाइनली ब्लॉक सिंपली वी कैन पुट द कोड फॉर लॉग आउट और टू क्लोज द ब्राउजर which is going to happen by default. Okay, so that's why generally it is not covered for the exception handling, but try, catch and finally that block is also used. बट उसका यूज क्या है समझ लीजिए, फाइनली ब्लॉक का कुछ ऐसे एक्शन जो बाय डिफॉल्ट होने हैं या आपको करना है परफॉर्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरर यू आर गेटिंग. एरर आती है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आती है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? इसमें कोई डाउट है किसी को? No, सर मतलब नॉर्मल हम नॉर्मल, हाँ नॉर्मल सेंटेंस जो लिखते हैं आप
वो लिख सकते हो उसमें, जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक के बाद नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते क्या एजुकेशन के लिए? लिख सकते हो ना आप, व्हाई नॉट, इट विल गो लाइन बाय लाइन। यहाँ पे अगर आप कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो प्रिंट होते रहेगा। तो जे भी फाइनली ब्लॉक यूज करने का क्या मतलब? फाइनली मतलब, अब देखिए आप इंडिविजुअल सेंटेंस टाइप करोगे तो इट विल नॉट आइडेंटिफाई कि वो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कि वो इंडिविजुअल लाइन है ना। इंट ए इज इक्वल टू 2 एक इंडिविजुअल लाइन है, इंट बी इज इक्वल टू 2 एक इंडिविजुअल लाइन है, और इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक इंडिविजुअल लाइन है। बट ये सभी तीनों लाइन एक पर्टिकुलर एक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो आपको इसको कैच ब्लॉक में डालना पड़ेगा, सॉरी फाइनली ब्लॉक में। आई विल शो यू दैट ऑल्सो, ओके, डोंट गेट वरीड। मैंने अभी बस इसलिए यहाँ पे बताया बिकॉज जनरली यू विल गेट लाइक ट्राई कैच और फाइनली, एक कॉम्बिनेशन मिलता है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में या कभी भी। सो फाइनली का मतलब क्या है, अगेन आई विल ट्राई टू शो यू व्हाइल लर्निंग द सेलेनियम, डोंट गेट वरीड। एज ऑफ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्राई ब्लॉक एंड व्हाट इज द कैच ब्लॉक, ओके। जब हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे ना ऑटोमेशन के, तब मैं फाइनली ब्लॉक में जो कोड लिखूंगा ना, उससे आपको आइडिया पता चलेगा कि फाइनली ब्लॉक एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ओके, डोंट गेट वरीड। ओके सर। So this is the exception handling. Again the second method is throws exception, वो भी मैं आपको during Selenium कोड ही दिखाता हूँ, okay, while executing our test. Okay. Now, let me share my screen. Can you see my screen? Yes. Okay. Now we are going to see the most awaited, right? The most awaited concept to you, like Selenium WebDriver. What is Selenium? API. Selenium is an API having group of components. What are the components of Selenium? Selenium IDE, Selenium RC, Mm-hmm. Selenium WebDriver, and Selenium Grid. Good. What is Selenium ID's advantage? It does not have play and record function. You are saying something totally reverse. What is the advantage of IDE? Like it's a simply play and record and play tool like this. What is the disadvantage? We cannot do the coding in the IDE. So next component you are getting as a Selenium RC. In that, the advantage is you can do the programming. But what is the disadvantage for Selenium RC? We cannot execute it. No. There is a error, sorry, there is a disadvantage like client and server mechanism. Remember I told you, if you are using Selenium RC, each time you have to start the server, each time you have to close the server or stop the server. Yes, Same, yes. you have to write the code to start the client and stop the client for each and every test cases. So that is a disadvantage with RC. And now in a market, Selenium RC and Selenium IDE are not used. These are the outdated. Now in the market we are using the component as a Selenium WebDriver. Okay. So we are going to learn the Selenium WebDriver. Okay. For the automation. Okay. Now we have seen the real implementation or real-time implementation of the automation, right? So what is the prerequisite to start the automation? Freeze test cases and And stable very good, stable application. application. Yes. Very good. So to start the automation, the prerequisite is stable application or the software which we want to test, and the finalized or freeze test cases, manual test cases.
Okay, so requirement is what? The manual test cases. Sorry, manual test cases. Okay, now we have seen that also. Like for the build one, you are having some set of manual test cases. Again in build two, with the new functionality, you are adding some more test cases. So at one time, for like build 3, 4, 5, you will have more number of test cases. At that time, what you will try? You will try to develop the automation scripts, है ना? तब आप क्या करोगे? ट्राई करोगे टू डेवलप द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, मतलब आप कोडिंग स्टार्ट करोगे टू राइट डाउन द कोड फॉर दैट मैनुअल टेस्ट केसेस. Exactly, we are trying to develop the scripts, means what we are doing is we are trying to perform some action. Yes or no? We are trying to perform some action. Okay? Now, how we can do the action? How we can do the action? Method. By using method. Okay, we are doing the method. Okay, like we are going to use the method to perform a particular operations. Okay, where is method present? In class. In class. Very good. Where is the class present? Package. Package. Inside the package. Okay, यहाँ तक हमने देखा था एज अ पार्ट वन. इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू दिस इज योर पार्ट वन. जस्ट वेट फॉर द पार्ट टू. वेयर इज द पैकेज इज प्रेजेंट? Project. Project. Okay. Okay, it is in the project. Okay, where is the project present? Where is the project present, guys? In Workplace. system. Workplace, in system, in your local, right? Okay, so these the like project, local, all these are like what we are doing in our machine, okay, or in laptop. Okay, but generally all these packages will be combined in jar file. Okay, now part 2. यहाँ तक हमने सब पार्ट देखा था. व्हाट इज मेथड, क्लास, पैकेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, like where all the packages are present in jar files. In jar files, for example, you want to perform an action, where you will get the method, that is what method you are using, the method to perform action. So where you can get the method? In class. Where you can get the class? In package. Where you can get the package? Inside the jar files. Okay, अभी जार फाइल वगैरह क्या होता है ये सब हम देखेंगे. जस्ट रिमेम्बर, पैकेज किस में है? जार फाइल में. Where you can find the jar files? Simply, guys, in Google. Wait a minute. Can you hear me? Yes. Yeah. So we can find the jar files on Google or respective website. आपको jar file कहाँ मिलेंगे? You can find it in Google or in website. Okay. Okay. Now listen carefully. Methods are also of two types. We have seen, right? Two types of method, you know. One is predefined.
Yeah, very good. One is predefined, or we can say defined by the language, and second is User user defined. defined. User defined. Okay. Now here in predefined we may have it may be defined by the Java language or by the Selenium, है ना. देखिए अब ये predefined में क्या हो सकता है, either it may be present in the Java or maybe in the Selenium. Okay, sir, not get worried, we want to just use that, right? Generally now working with Selenium आपको यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाने की काफी कम जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैक्सिमम दी methods which we are using is from the Java or Selenium, which are already defined. If we want that method, how we can use that method? If we want to access this method, how we can use this? By import. creating, yeah, by creating the object also, right? अगर मेथड चाहिए तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट भी बनाना है. ओके, नो इशू. नाउ listen carefully. See, all methods are present in class, all classes are present in these packages, all packages are present in this jar files. Okay, now simply the jar files you will get as an a software or simply the exe file. अब आपको गूगल पे जो मिलेगा है, आप जार फाइल भी अगर उसको सर्च करोगे तो यू विल गेट एज अ सॉफ्टवेयर और यू मे गेट एज एन एग्जीक्यूटिबल फाइल. ओके, जितने भी हमारे क्या होते हैं प्रोजेक्ट्स, अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इफ यू डिकोड इट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ जार फाइल्स, you can find number of jar files, and that jar files or that respective software we can download directly from the Google or from the respective website. वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पर्टिकुलर जार फाइल लेने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक टू वर्क विद द सेलेनियम, है ना. नाउ इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सेलेनियम सेटअप, है ना. अब देखिए आपको अभी तक हमने जो भी हमने Eclipse में कोडिंग किया, वी वर्क अप टू हियर, अप टू पैकेजेस, वी हैव क्रिएटेड मेथड, वी हैव क्रिएटेड क्लासेस, वी हैव क्रिएटेड द पैकेजेस. यहाँ तक हमने काम किया, राइट? आफ्टर दैट वी हैव टू वर्क विद जार फाइल्स एंड हाउ टू गेट फ्रॉम द सोर्स, आइदर मे बी गूगल और वेबसाइट. और ये जार फाइल मिलने के बाद इसका करना क्या है? चलो जार फाइल तो आप गूगल से डाउनलोड कर लोगे, बट हाउ वी आर गोइंग टू मेक the use of this in our Eclipse or while coding, वो देखना है, और उसको हम कहते हैं Selenium setup. Okay, if we are not doing the proper setup, then आप कितना भी कोड लिखिए, you will get an error or you will not get an required output. So very important. देखिए आप एक बार सेटअप करोगे तो कोडिंग काफी इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी. आपने अभी तक जो जावा देखा है ना, उससे कहीं आसानी से वो इजी है, बट ओनली इज राइट वी हैव टू डू द प्रॉपर सेटअप. We have to do the proper setup, and what is the procedure to do that setup we can see in the next lecture. Okay, so from next lecture compulsorily आप अपने सिस्टम भी लेके रखिए साथ में. Okay, if you have the laptop, try to attend the session on the laptop only. Okay, I will try to show you exactly what are the jar files, where we can get it, what are the use of that jar files, और वो सेटअप के लिए यूज भी कैसे करते हैं. जार फाइल तो आपको कोई भी दे देगा, बट हाउ टू यूज दैट फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और अगेन इंटरव्यू में भी जब आपको क्वेश्चन आता है तो आजकल तो डायरेक्टली आपको नोटपैड पे पूछते हैं टू राइट एन ए कोड, बट इफ समटाइम्स अगर आप कहीं ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वी नीड टू चेक द सेटअप एज वेल, कि वहाँ पे जार फाइल्स है कि नहीं जो रिक्वायर्ड चाहिए, पैकेजेस क्रिएटेड सही से है क्या नहीं, तभी आप जाके वो कोड लिखोगे. अदरवाइज आपने सेटअप चेक नहीं किया, डायरेक्टली आप कोड लिखना चाहते हो तो आपको एरर ही आएगा. ओके, गॉट इट? इसमें कोई किसी को डाउट है इन दिस प्रोसेस? No, sir. अप टू पैकेजेस वी हैव सीन, राइट? अभी तक हमने जो बेसिक जावा देखा है उसमें हमने पैकेजेस क्रिएट किए थे, क्लासेस क्रिएट किए थे, मेथड्स देखे थे, है ना, एंड सम परफॉर्म द एक्शन बाय यूजिंग द प्रिंट मेथड और जो भी था.
But hereafter, like next part, we are going to see the jar files and its setup with our project. Okay. So in next class, we are going to see that process tomorrow probably. Okay. कोई डाउट है किसी को इसमें? Any doubt? No, sir. Okay. Now see, after doing the Selenium setup, we are going to try with the developing the automation script for particular actions. तब आपको concept क्या लगेंगे? Prerequisites, the object identification. Is it covered or not? Object identification देखा है कि नहीं देखा है हमने? Have we covered or not, guys? No, sir. We have covered it. Locators. Yes, yes. It is a object identification. आपको identify करना है ना object मतलब मैंने क्या कहा था? जितने भी It's a बटन web element. जितने भी बटन्स एलिमेंट आपको वेब पेज पे दिखते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट while doing the automation. तब मैं उसको बटन वो बाद में टर्म कहूंगा, बट फर्स्ट मेरे लिए तो वो ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था, इट्स सिंपली बाय यूजिंग द लोकेटर्स, 8 टाइप ऑफ लोकेटर्स. अगेन आप अगर उसका सिंटैक्स भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके, दैट इज अ प्रीरिक्विजिट. एंड ऑल द कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मेथड, क्लास, ऑब्जेक्ट, then static method, non-static method, loops, and all these statements, inheritance तक, even exception handle तक, जो भी आपके कंसेप्ट है वो एक बार गो थ्रू कीजिए आप बस. ओके, सेलेनियम में कोई अलग नहीं होगा, बस यही कंसेप्ट को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. और जो लोकेटर्स है, दैट मीन्स सिंपली द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, दैट वी शुड बी वेरी क्लियर. वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो अगेन वी कैन नॉट क्लियर दैट. उसके लिए काफी टाइम जाएगा कि सर आपने यहाँ पे आईडी क्यों लिया, आपने एक्सपाथ ही क्यों लिया है और कैसे लिया है. ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए जस्ट गो बैक एंड ट्राई टू रिवाइज द कंसेप्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको on web pages whatever the elements you have, you just identify it correctly. अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे sorry, so if you're not going to identify that, आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना. सो इसलिए मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन लिया था एंड वी हैव मेड मोर प्रैक्टिस. है ना, मैंने आपको कहा था कि आप रैंडम एलिमेंट ट्राई कीजिए एंड ट्राई टू मेक एन एक्सेल शीट. आई गेस कि आपके पास एटलीस्ट कुछ बेसिक एलिमेंट के लिए वो एक्सेल शीट रेडी होगी. पॉसिबली जितने आप लोकेटर्स यूज कर सकते हो उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आपने वो किए होंगे और उसकी एक्सेल शीट मेंटेन होगी, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ. ओके, आई विल डायरेक्टली आस्क कैन यू गिव मी दैट लोकेटर्स फॉर दिस एलिमेंट. तो आपके पास वो एक्सेल शीट भी होनी चाहिए. अदरवाइज आप वहाँ पे सिंटैक्स लिखोगे, ट्राई करोगे लोकेट करना, तो इट विल कंज्यूम टाइम. ओके, सो जो प्री रिक्विजिट है ये सिंपल, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ट्राई टू रीड दैट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एज वेल. है ना, बस हैंड्स ऑन भी चाहिए. अगर आप बस पढ़ोगे थ्योरेटिकली और सिंटैक्स ही आपको याद नहीं हो रहा है एट लास्ट मोमेंट, so it is not going to work you. Okay, so we'll stop here. Again we'll see the tomorrow session as a setup, Selenium setup. Okay, we'll stop here. Thank you.